Let's move on now from the national capital, Delhi, to the state of Gujarat. There's still grief. Remember the bridge collapse that happened barely about a few days ago, and 16 innocent lives have now been confirmed dead. India Today gets you a reality check of bridges across Gujarat, especially after the Morbi bridge collapse. Then this collapse happens of the bridge in Vadodara, and in 24 hours, 16 lives lost, including children. Amid allegations of negligence, India Today travelled across the strait, tracking the status update of the bridges. We found alarming situations. Surat to Amreli, bridges have fallen in disrepair. In Surat, look at that, that's what our colleagues found. The bridge over the Tapi River is severely damaged. A 7-foot wide iron plate was installed for years as a temporary fix. Thousands of vehicles, including heavy vehicles, cross daily on this bridge, but the plate bounces, causing fear and sometimes accident as well. What are the experts saying about it? Now, despite the complaints, National Highway Authority hasn't made a permanent repair. That should come in as well. Even Gujarat's Education Minister visited a month ago. The iron plate, we were told, was replaced, but much more needs to be done. And there are residents who fear if an accident is imminent. Across the Amreli belt as well, the reality also is as stark. 70-year-old Shetruji River Bridge was built for small vehicles, but there's heavy traffic still that is allowed on this. It's dilapidated. Look at the situation, the condition of the bridge. Drivers fear if the vibrations increase more than usual, it may collapse. India Today recorded broken railings, makeshift bars on the bridge. This is basic public infrastructure that the administration of Gujarat needs to look at. इस ब्रिज की जो ये प्लेट थी पहले एकदम छोटी थी, अभी ये 7 फुट की हो गई। इस ब्रिज के 2 भाग ऐसे एक तरह से देखा जाए तो हो गए, क्योंकि यहाँ से जाते समय जो ये आवाज आता है और ये जो डर लगता है, बहुत ही बहुत डरावना है। नेशनल हाईवे नंबर 48 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप हाईवे की हालत देखेंगे तो ये तापी नदी पर जो ब्रिज बना हुआ है, और इस ब्रिज की हालत आप देखेंगे कि यहाँ से वाहन जो है निकलते हैं, क्योंकि ये देखिए अब टूटा हुआ है। अगर इंसिडेंट्स कोई होता है तो आप सीधे नदी में जाकर गिरेंगे। ये जो लोहे का यहाँ पाइप लगाया हुआ है, ये इतने इलाके में ये भी कटा हुआ नजर आ रहा है। और ये जो प्लेट है, ये प्लेट के जरिए हम आपको दिखाएंगे। ये प्लेट जो है, ये पहले 1 फीट की हुआ करती थी इस जगह पर, अब ये बढ़कर 7 फीट की हो गई है। और इसी 7 फीट की प्लेट से जो वाहन चालक है निकलते हैं, छोटे वाहन हो बड़े वाहन हो, वो सभी इसी से ही निकलते हैं। और ये बहुत ही जोखिम भरा है, क्योंकि जब भी वाहन यहाँ से निकलते हैं तो ये जंप करता है। आप देखेंगे लोहे की जो प्लेट लगी है, ये प्लेट जंप करती है, उसके साथ में वाहन भी यहाँ पे जंप करते हैं। तो जब आप हाईवे पे यहाँ सफर कर रहे हो और अचानक से व्हीकल आपका जंप कर दे तो आपको डर का एहसास भी होगा। तो आप देखेंगे कि ये प्लेट के सहारे ये ओवर ब्रिज चलाया जा रहा है। ये ब्रिज बहुत पुराना है, मेरे जन्म से पहले का ब्रिज है और हालात भी बहुत खराब है। अभी चलने में भी दिक्कत आ रही है। सावरकुंडला और अमरेली के जोड़ता ब्रिज है और वहां पर अभी इस तरीके की परिस्थिति है कि कभी भी जानहानि हो सकती है। So India Today consistently is doing these safety checks, and I must add here, not just in the state of Gujarat, but what are the safety lapses that were flagged off in 2022, for example? That the condition of the bridge, and I'm talking about the bridge that collapsed, condition of the bridge is very serious. There are vibration more than usual in pillars that has increased over the years. Residents had already mentioned that stability report of the bridge should be issued, that there should not be loss of life in future. I'm in fact quoting from a Panchayat member letter to the Vadodara DC. Local administration was informed by alert residents. 16 lives were lost, and remember the visual of the mother who managed to save herself but was wailing, requesting for help while she watched her little child drown. Who will be answerable and accountable to these innocent families who lost their loved ones? Something to think about. And can we afford to really have another bridge collapse in a country that's trying to become a world power?